The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब बहुत खुशी है क्या? सब बहुत खुशी होगा। सभी समय में यही पूछते हुए हमारा कक्षा शुरू कर रहा है। कभी आपको समझा होगा क्यों ऐसे पूछते हैं ये सब, ठीक है। सब तो घर पे बैठ रहा है इसलिए बहुत खुशी होगा। तो पिछले कक्षा में मैं ऐसे पूछा था, आप लोगों के बीच में से कुछ छात्र ऐसे मुझे मैसेज दिया, मुझे तो ऐसे संदेश भेज दिया है कि क्या जी आप लोग ऐसे कहते हैं, हम घर पे बैठकर कैसे सुखी होते हैं, बहुत दुखी हैं, हमें तो स्कूल पे आने की बहुत इच्छा होते हैं, ऐसे ऐसे कहते हुए मुझे संदेश भेज दिया था। मैं केवल ऐसा सोचा था कि घर पे बैठकर पढ़ना तो और एक खुशी है, ठीक है। केवल ऐसा सोचकर मैं इसे बताया था, ठीक है। जो भी हो, तो पिछला कक्षा आप सबको समझा होगा। कई लोग तो नोट्स भेज दिया था, लेकिन कुछ लोग तो वो भेजने की बाकी हैं। ज़रूर वो लोग तो ये वीडियो देखकर वो एक साथ मुझे भेज देना है, क्योंकि उसके आधार पर हम लोग तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, निरंतर मूल्य निर्णय CE, वो तो उसका अंक रखेंगे। इसलिए ज़रूर उसके आधार पर ही आपका वो तो पब्लिक एग्ज़ाम के लिए तो CE ये सब देते हैं। तो वो समझकर आप लोग ज़रूर वो तो मुझे भेज देना है, ठीक है। भूलो मत, याद रखना है, ठीक है। तो पिछले कक्षा सबको समझे क्या, ठीक है। तो उसकी अनुवर्ती कार्य जो कुछ बाकी है, केवल एक ही कार्य हम लोग बताया था, वो तो आस्वादन टिप्पणी, उसके तरीका वो किस प्रकार लिखना है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, केवल वही मैं बता दिया आपको। तो आज कुछ भिन्नता होते हैं, आज तो उसके बाकी भाग जो हैं वो भी मैं बता दूंगा। उसके साथ ही साथ वो और भी आपके किताब में जितना प्रश्न है उसमें से ज़्यादा कुछ प्रश्न और उसका उत्तर की नमूना भी मैं आज की कक्षा में आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना है, ये सब आप तो पुस्तिका में लिखना भी है, ठीक है। और आपको समझने के लिए कोई दिक्कत है तो ज़रूर मुझे बुला सकता है, मैं शंका समाधान करूंगा। क्योंकि आपके कक्षा में अंतिम जो छात्र भर्ती किया है वो छात्र तो वो शंका समाधान के लिए बीच वो बुलाती हैं। और इतना भी नहीं है, वो तो पूरा सा पूरा पाठ भाग में तो व्याख्या भी दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा किसी को नहीं समझा है, व्याख्या की आवश्यकता है, तो ज़रूर आप लोग मुझे बुला सकते हैं। तो समय के अनुसार मैं आपको व्याख्या भी बता दूंगा, ठीक है। छायावाद में कवि कोमल पदावलियों का प्रयोग करते थे। निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर कविता में प्रयुक्त शब्द जानकर लिखें। इसमें क्या क्या दिया गया है? वसंत, मौसम, भूमि, आकाश, जंगल, शिशु, कली, किसलय, मलय समीर, आंख, कमल, प्रभात, पूरब, समुद्र, चांद, रात। तो ऐसे शब्दों को वो कविता में किस किस शब्दों से उसे व्यक्त कर रहा है, तो वो आप तो लिखना है। आसानी है, आपको समझा होगा है क्या पूरा सा पूरा। तो बाकी अगला अनुवर्ती कार्य, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय व्यक्त करें। इस एकांत सृजन में कोई कुछ बाधा मत डालो, जो कुछ अपने सुंदर से हैं दे देने दो इनको। कविता के प्रमुख पंक्तियां हैं इस
कविता के प्रमुख पंक्तियां हैं ये सब, आपको जानता होगा। तो वो कवि क्या उसमें से आशय हमें दिया गया है वो तो आप लोग लिखना है, ठीक है। और अगला बहुत छोटी है, निम्नलिखित छायावादी प्रवृत्तियों को सूचित करने वाली पंक्तियां लिखे। वो नीचे जो जो आशय दिया गया है वो आशय किस पंक्ति में हैं, वो किस पंक्ति में निहित हैं वो तो आप लोग लिखना है, ठीक है। वो सबसे पहले इसे दिया गया है, सबसे पहले इसे दिया गया है प्रकृति चित्रण। वो किन किन पंक्तियों से हमें समझ सकते हैं ये प्रकृति चित्रण, वे मैं आपको बता दूंगा, तो भी आप लोग गुद लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो बाद में वो बता दूंगा, इसी वीडियो में भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले कितना लोग वो गुद गोचेंगे वो समझने के लिए मैं सबसे पहले इसे कहता हूं, ठीक है। तथा मानवीकरण, सौंदर्य वर्णन, प्रेमानुभूति, ऐसा ये सब किन किन पंक्तियों से हमें समझ सकते हैं वो आप तो गुद गोचने के लिए कोशिश करना है। ये छोटी खेल है, तो ചെറിയ കളിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. കാരണം ഈ ആശയം വരുന്ന വരികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കളിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ആരോടും പറയണ്ട, നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ടത് ആരും കാണാതെ എനിക്കത് അയച്ചു തരിക. ടീക്കേ, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കളിയല്ലേ? നോക്കാം എത്ര പേര് കളിയിൽ വിജയിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം. ടീക്കേ, तो बाकी इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए ആലാപനം കരെ. നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. കാരണം താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കവിത അതിമനോഹരമായി പാടി വോയിസ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോ, അല്ലാതെ ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്ര പേര് അത് അതിമനോഹരമായി പാടി എനിക്കത് അയച്ചു തരും എന്നുള്ളതും കൂടി എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട്, വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ. ടീക്കേ, ഈ പറയുന്ന താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഭാവാനുകൂൽ പ്രസ്തുതി, കവിതയുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന്. ഇനി രണ്ട് പറയണത് ഉചിത് താളലയ, യഥാർത്ഥ താളലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നെ പോലെ നല്ല താളബോധമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് അത്ര താളബോധം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. കാരണം മിക്ക വരികളുടെയും ആദ്യത്തെ വരി മാത്രം എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല, അപ്പുറം എനിക്ക് കഴിയാറില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ താളം ഒന്നായിരിക്കും, ശ്രുതി ഒന്നായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. കാരണം വെച്ചാൽ ഡെസ്കും ബെഞ്ചും മാത്രം ഉണ്ടാവും, വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടിക്ക് ശ്രമിക്കാറില്ല. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിലൊക്കെ അറിയാതെ ഇരുന്ന് ആദ്യത്തെ വരി മാത്രം, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി മാത്രമൊക്കെ പാടും. ചിലരത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നോക്കും. വേറെ ഒന്നിനല്ല, ട്രോളിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പക്ഷെ നിങ്ങളങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ അതിമനോഹരമായി പാടുന്നവരാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക. ടീക്കേ, മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് പോലെയല്ല, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. സയൻസിലെ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളത് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങനെയല്ല. സയൻസിലും കൊമേഴ്സിലും കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവരെ ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള കൊമേഴ്സിലെ കുട്ടികൾ ആരൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ്, ബോയ്സിനിപ്പോൾ ഗേൾസ് ആയാലും ഗേൾസിനിപ്പോൾ ബോയ്സ് ആയാലും ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണാൻ ഉള്ളൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കാനുള്ള പ്ലാനുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് വൈസ് ആയിരിക്കും. +1, +2, അത് സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, അങ്ങനെ 4 സെക്ഷനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ഒത്തുകൂടാം. അതിനുള്ള അവസരം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. +2കാരുടെ 1-2 അവസരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലൊരു അവസരം തരാം. എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ അവസരം വേണമെന്നുള്ളൊരു മാത്രം ഒന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെ ഹായ് മെസ്സേജ് ഒന്ന് അയച്ചു തരാം, എനിക്കത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് നടത്താൻ പോണത്. ടീക്കേ, ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുക, സഡിക് ശബ്ദ വിന്യാസ്.
കാരണം പദങ്ങളുടെ വിന്യാസങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പദ താളലയം എന്ന് പറയില്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ് പദവിന്യാസങ്ങൾ. കാരണം വെച്ചാൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ എവിടെ പദങ്ങളുടെ കയറ്റവും ഇറക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ചില പദങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, അരേ തു ആയി. അപ്പോൾ ചില പദങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തു ഭൂലീസി ആയി, കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ പദങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിന്യാസത്തോടു കൂടി അകല സഡിക് ശബ്ദ വിന്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ പദവിന്യാസത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കുക. ചില പദങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി പറയേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാവം ഒക്കെ ഭാവം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ പദങ്ങളെ സഡിക് ശബ്ദവിന്യാസ് പദങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടയോടുകൂടി കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ഊന്നൽ കൊടുത്തും അല്ലാത്തടത്ത് ഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട പദങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാനിതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇട്ട് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ട്യൂൺ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സഹായം ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങളത് എനിക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് അയച്ചു തരാം. എന്തായാലും आप लोगों की वो मीठी आवाज़, वो वाणी सुनने की इच्छा मुझे है, वो अवसर आप तो नष्ट मत करना है, ठीक है? तो अच्छा, तो बाकी वो किताब नहीं है, प्रस्तुत किताब में नहीं है, तो किताब के अलावा कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूँ, वो आप तो समझना है, ठीक है? पहला इसमें ऐसे हैं कि हमारे किताब पे नहीं है, लेकिन कुछ और एक प्रश्न है, तो आप लोग ये सब ध्यान से समझना है. जो लोग ठीक तरह से वीडियो देखा है तो उन लोगों को ही ये प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न और कहीं और से मिलने की संभावना बहुत कम ही होते हैं. वो पहला पंक्तियों में कौन आ गई है, वो पंक्तियों से कहते हैं क्या, अरे आ गई तू, तो यहाँ पे कौन आ गई है, ठीक है? ये प्रश्न लिखना है और उत्तर भी लिखना है. और दूसरा, प्रेमी नई विदा साथिन के लिए क्या करना चाहता है. यहाँ पे प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए या व्यदा से, प्रेम व्यदा से भरा हुआ वो साथिन के लिए क्या तैयार कर रहा है, अगला प्रश्न. और तीसरा, प्रेम का नीड कहाँ स्थित है, कवि प्रेम का नीड कहाँ बना दिया गया है. और अगला, जंगल के उपलजट में कौन भाग जाना है, वो कविता में कहते हैं झारखंड के चिर पदचट में बाको, बाकी जो है वही वो तो उत्तर होता है, वो तो उत्तर होता है, ठीक है? वो तो ध्यान से समझकर अब तो लिखना है. वसंत के आगमन से प्रेमी के मन में किसका अंकुर झूलने लगता है, और मलयानिल की लहरें कैसे आती हैं. सबसे पहले ये प्रश्न मैं पढ़ूंगा, ये प्रश्न आपको समझना है, फिर ये प्रश्न के आधार पर आप तो कविता से उत्तर ढूंढकर लिखना है, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, मैं पढ़ूंगा. बसंत के आगमन से प्रेमी के मन में किसका अंकुर झूलने लगता है, मलयानिल की लहरें कैसे आती हैं, प्रेमिका के कमल नयनों को कौन चूमता है, लाल कुसुम के समान उषा कहाँ गिलेगी, अंधकार के सागर को पार कर कौन आता है, रात में हिमकणों को कौन छिड़कता है, प्रेमिकों को आपस में क्या दे देना है. प्रश्न केवल इतना है. तो ये प्रश्न सब समझकर अब तो कविता से उत्तर ढूंढकर लिखना है. तो कुछ प्रश्न और उसका उत्तर के नमूना मैं दूंगा, लेकिन केवल नमूना मैं देता हूं, उसके साथ ही आप तो जोड़कर अपना आशय जोड़कर लिखकर मुझे भेज देना है, ठीक है? मधुदू रूबी प्रेमिका क्यों भूली भड़की सी आई है, पहला प्रश्न. ये तो एक प्रश्न है, उसका उत्तर का नमूना मैं देता हूं, लेकिन आप तो कुछ भी ज़्यादा जोड़कर मुझे भेज देना है, ठीक है? प्रेमिका के मन में प्रेमी के प्रति तीव्र अनुराग है. कोई भी प्रेमिका अपनी प्रणय भावना गुल्लम गुल्ला प्रकट करना नहीं चाहती, गुल्लम गुल्ला प्रकट करना नहीं चाहती. दिल में प्रणय छिपाकर वो भूली भड़की सी आ रही हैं. ये तो उसका छोटी नमूना है. तो इसमें से प्रस्तुत कविता द्वारा अपना आशय भी जोड़कर आप तो मुझे
भेज देना है। ठीक है, तो और एक प्रश्न है, वसंत के आगमन पर कौन सी ऋतु चली जाती है? पतझड़ या शिशिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? वसंत की विशेषताएं क्या क्या हैं? या वसंत किन किन का प्रतीक हो सकता है? अगर वसंत प्रेम और आशा का प्रतीक है तो पतझड़ किन किन का प्रतीक हो सकता है? ये तो आप तो समझ कर लिखना है। तो बागों सूखे तिनकों से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। वसंत ऋतु में पतझड़ के सूखे तिनकों पत्तों का कोई स्थान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार प्रणयातुर दिल में दुख और निराशा का भी कोई स्थान नहीं। प्रणयहीन दिलों को प्रणय की दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये तो बहुत छोटी रूप से मैं दिया है। तो प्रस्तुत हमारे किताब में पीछे भाग में उसका आशय दिया गया है, वो आशय और कविता इसमें से समझकर अब तो ये तो लिखकर भेज देना है। ठीक है, अगला, वसंत ऋतु में प्रकृति को मोहक बनाने वाले अंग कौन कौन से हैं? ഏതൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിയെ മനോഹരിതമാക്കി മാറ്റുന്നത്? आप इनमें किनको अधिक खूबसूरत मानते हैं प्रस्तुत कविता के आधार पर? क्या इनमें एक के अभाव में ये सुंदरता पूर्ण होगी? तो इस सुंदरता में हर अंग की अपनी भूमिका है ना। मेरे किसलई का लघुभाव से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर भी मैं देता हूँ, सुनो आप लोग। वसंत ऋतु में प्रकृति को खूबसूरती प्रदान करने में अंकुर, किसलई, कलियां, फूल, पत्ते, तितली, भ्रमर, कोयल, मंद पवन सबकी अपनी अपनी भूमिका है। किसी एक के बिना प्रकृति की सुंदरता अधूरी रह जाती है। उस सुंदरता में किसलई भी अपना एक छोटा संसार रचा है, अपना एक छोटा संसार रचता है। प्रणय में प्रेमी प्रेमिका का हर भाव, यादें, इंतजार, कटाक्ष, मुस्कान, चाल प्रणय की तीव्रता को बढ़ाता है। यही अनुभूति प्रणय के प्राण हैं। ज़्यादा समझदारी के लिए मैं आपको ज़्यादा प्रश्न और उसका कुछ प्रश्नों का उत्तर का नमूना ये सब देता है। ये सब मिले तो आपको आसानी से पूरा प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगला कुछ भी, उषा कहाँ उदित होती है? उदय के समय आसमान में कौन सा रंग फैल जाता है? उषा का आगमन कैसा है? उषा शब्द किन किन की ओर इशारा करता है? उसका नमूना मैं देता हूँ। प्राची में आने वाली उषा प्रकाश किरण के रूप में प्रकृति में लालिमा लेकर आती है। कवि की रागात्मक दुनिया में आने वाली उषा प्रेमिका के रूप में जीवन में सौंदर्य की लालिमा लेकर आती हैं। ठीक है, उसका आशय में दिया है। इस एकांत सृजन में कोई कुछ बाधा मत डालो, जो कुछ अपने सुंदर से हैं दे देने दो इनको। उसके व्याख्या के बारे में सबसे पहले प्रश्नों में मैं दिया था, उसका उत्तर का एक छोटी नमूना मैं अभी पढ़ूंगा। आप लोग ये समझकर उसके साथ आपके आशय भी जोड़कर लिखना है। ठीक है, वसंत काल अपनी संपूर्ण भंगिमा के साथ प्रकृति में जा रहा है। इस एकांत सृजन कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। वसंत काल में वसंत और प्रकृति अपनी सुंदरतम चीज़ों को बिना मांग आपस में समर्पित करते हैं। यही समर्पण सृजन के सौंदर्य का रास होता है। प्रेमिका अपने संपूर्ण रूप सौंदर्य से युक्त होकर प्रेमिक के जीवन में जा रही हैं। प्रेमी प्रेमिका के मिलन और प्रणय सृजन के अपूर्व एवं मोहमयी वेला में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। प्रेम के इस चरमोत्कर्ष क्षणों में प्रेमी प्रेमिका का द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और दोनों एकाकार हो जाते हैं। सृजन के वे क्षण सृष्टि के सुंदरतम सौंदर्य की वेला भी हैं। इसलिए ऐसे कहते हैं, इस एकांत सृजन में कोई कुछ बाधा मत डालो। अपने सुंदर से जो कुछ होता है उसे उसी प्रकार रखने दो, ऐसे कहते हैं। ठीक है, वो आप लोग समझकर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बताया गया नीचे दिए प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, मानवीकरण, सौंदर्य वर्णन, प्रेमानुभूति, ऐसे ऐसे भाव किन किन पंक्तियों से मिलेंगे ऐसे कहा है क्या। तो उसका नमूना मैं बता दूं। देखो, प्रकृति चित्रण के लिए
वसुधा नीचे ऊपर नभ हो अंतरिक्ष छिड़केगा कण कण। तो वसुधा नीचे ऊपर नभ हो अंतरिक्ष छिड़केगा कण कण, इसमें से प्रकृति का वर्णन करते हैं। मानवीकरण, पल्लव पुलकित होगा शिखर भरी कांति आवेंगी, ये तो മാനവികരൻ. പല്ലവ് പുളകിതോങ്കെ ഇവിടെ രോമാഞ്ചമാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രോമാഞ്ചം മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രകൃതിയിലുള്ള ചെടികൾ ചെറിയ ഇളം കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ചെടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇളക്കത്തെ ഇവിടെ പല്ലവ് പുളകിതോങ്കെ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും മാനവികരനാണ്. മനുഷ്യനുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് മാനവികരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ठीक है. സൗന്ദര്യവർണ്ണൻ, जब कुसुम सी उषा खिलेगी हंसी भरे उस अरुण अधर का, यहाँ पे प्रकृति का वर्णन होता है. जब तो प्रभात का वेला है, वो प्रभात के वेला में आकाश में किस प्रकार वो लाल रंग होते हैं, वो लाल रंग की वर्णन यहाँ पे करते हैं. ठीक है. तो प्रकृति का वर्णन यहाँ पे होता है. ये तो केवल नमूना है, बाकी आप तो समझना है. प्रेमानुभूति, पल्लव पुलकित होगा चुंबन लेकर और जगाकर, ये तो प्रेमानुभूति है. ठीक है. प्रेम से भरा हुआ है. കാരണം ചുംബനം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആ സമയത്ത് എന്താണ് പുളകിതമാകുന്നത്, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതും ഉണരുന്നതും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രേമത്തിൻ്റെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കവി പക്ഷേ അതിനെ പ്രകൃതിയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ठीक है. ऐसे जो कविता मिला है तो उस कविता से ऐसे जो कविता हमें मिला है वो कविताओं से हम ऐसे समझना है उसके प्रेमानुभूति क्या है, मानवीकरण क्या है, प्रकृति वर्णन क्या है, सौंदर्य वर्णन क्या है, ये सब हम लोग समझना है. ठीक है. अरे आ गई है भूली सी ये मधुर तो 2 दिन को, छोटी सी कुटिया में रच दूं नई व्यथा साथिन को. वसुधा नीचे ऊपर नभ हो, नीड अलग सबसे हो. 4 खंड के चिरपद चर में भागो सुखी तिनको. से अंकुर छू लेंगे पल्लव पुलकित होंगे. मेरे किसलय काल खुभवय आह खलेगा किनको. सिहर भरी कंतियां आवेगी मलयानिल की लहरें, चुंबन लेकर और जगाकर मानस नयन नलिन को. जवा कुसुम सी उषा खिलेगी मेरी लघु प्राची में, हंसी भरे उस अरुण अधर का राग रंगेगा दिन को. अंधकार का जलधि लांग कर आवेगी शशि किरणें, अंतरिक्ष छिड़केगा कण कण निशि में मधुर तुहिन को. इसे कांद सृजन में कोई कुछ बाधा मत डालो, जो कुछ अपने सुंदर से है दे देने दो इनको. दे देने दो इनको, दे देने दो इनको. ठीक है. तो केवल आज की कक्षा इतना है, बहुत छोटी बात है. केवल आज तो बहुत ज़्यादा गृह कार्य ये सब में दिया था, लेकिन सबका उत्तर और उसका नमूना में दिया गया है. उत्तर माने एक छोटी छोटी अंश में दिया है, पॉइंट्स में आपको दिया है, उसे व्याख्या करके आपको लिखना है. ठीक है. ठीक है. तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. तो बाद में मिलेंगे. बाय.